everyone and welcome back to my channel. Myself Dr. Supisani. Hope you are doing great. Now today I come forward with another solution regarding the big query from your side, that is how to start a charitable clinic or a charitable hospital. See, charity simply means social work, right? Social work, that means work for the poor people or work for the society, and even you can provide the healthcare services or the education absolutely free. So regarding the charity, you need a society, right? Now the question arises that what is society and how you can register for that. Society is just a legal human term, or it is considered to be a legal authority under which you can carry out the certain procedure which are absolutely free, and you can freely able to do the social work, right? Now the most important question is how you can register a society in India. To register a society, you need first of all the 7 members which are compulsory, right? And their details like their name, their father's name, their occupation, and their Aadhaar card or PAN card or voter card or even the license, right? Then second step is wherever you want to start your setup or want to start your own setup, if it is on a rented place, then the rent agreement is required. If that place is on lease, then lease deed is required. Right? Building or that flat or something which is at your own property, then you need its electricity bill. And if you have just a plot and you want to build and do the charity in future, like building a charity hospital or charity clinic, then you need the registry of that particular place or that particular plot which belongs to you, which is very, very important. 3 names which will be selected either from the 7 members which I have already told you, which is compulsory to make a society for charity, or either you can take a separate 3 names and then you send those 3 names online to the government so that they can choose one name and on which you can set up your charitable clinic, hospital, school, or whatever you want to do under the name of charity, right? Mostly we have seen that the first name is given by the government. They review and they give back one name, and mostly we have seen out of the 3 names, the first name is the usual name they given to us, so as we can frame our society, our building, even the school, charity hospital on the basis of that particular name, right? Before sending the 3 names for your society, please Google it once that whether this name has been registered in the government official or has been registered somewhere, somehow or not. Because it is very important कि आप जो भी नाम सेलेक्ट कर रहे हैं 3, वो 3 नाम कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए. किसी भी गवर्नमेंट प्रोफेशनल में, किसी भी रजिस्ट्री में, किसी में भी नहीं होना चाहिए. कोई भी गवर्नमेंट की या प्राइवेट के काम में वो नाम रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए. ऐसे 3 नाम आपको गवर्नमेंट को भेजने हैं. भेजने से पहले आप गूगल करके ये चेक कर सकते हैं कि वो कहीं यूज तो नहीं हो रखे, किसी और की सोसाइटी तो नहीं बनी हुई उस नाम से, राइट? फॉलोड बाय आप उसे गवर्नमेंट को भेजेंगे, गवर्नमेंट उसे रिव्यू करके भेजेगी. मोस्टली जो पहला नाम होता है गवर्नमेंट उसी को ही रिव्यू कर देती है. ऐसा हमने माना है, हमने जो देखा है अभी तक जितनी भी एनालिसिस वगैरह हुई है कि जितनी भी सोसाइटियां अभी तक बनी है चैरिटी के लिए, उसमें जो पहला नाम दिया जाता है उसी के नाम पे सोसाइटी बन जाती है. नेक्स्ट स्टेप आता है कि देयर इज द नीड ऑफ द 5 कंपल्सरी मेंबर्स. या तो आप उन्हें वही 7 मेंबर्स में से ले सकते हैं या आप अलग से 5 मेंबर और ले सकते हैं. एंड यू हैव टू अपॉइंटेड एंड गिव द पोस्ट ऑफ आइदर द प्रेसिडेंट, vice president, joint secretary, general secretary, and the treasurer. This is very, very important and a compulsory step, right? And you need their complete detail again in one file, like their name, their father name, their occupation, again their Aadhaar card, PAN card, voter card, and even the license, right? Followed by that, you make one file and send it to the government through the online mode. You will upload it. There will be the verification of the certificates which will take place online. And for that, you have to give the online fees only.
as everything in this era has put online mode. Yeah, that's why online verification will be take place. Once the verification is done, you will certified or granted with the registry, society registration certificate will be granted to you. Then you have to take that certificate and make a society deed, right? Society deed you have to make from the court, in which you have to mention all the details including the terms and conditions of your society, followed by all the details of the members, followed by the course and the time period of their post, followed by their personal details and so on, right? That means the complete detail is the need of the hour, that it should be there in the society deed only. The society is framed. Now the second question arises that what is the annual compliance of the registered society? क्या होगी एनुअल कंप्लायंस, यानी कि हमें उसे चलाना कैसे, सोसाइटी रजिस्टर्ड कर लिया, अब उसे हर ईयर आप रिन्यू करेंगे तो चलाना कैसे उसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन. स्टेप इज द एनुअल सबमिशन रिपोर्ट विच हैज टू बी सबमिटेड इन द रजिस्ट्रार ऑफिस के एनुअली आपकी चैरिटी के थ्रू आपकी सोसाइटी ने क्या क्या काम किया. सेकेंड स्टेप इज द इलेक्शन रिपोर्ट विच हैज टू बी गिवन विद इन 3 आवर्स. आपको हर 3 साल बाद इलेक्शन रिपोर्ट डालनी है, देनी है, जिसमें आपको बताना होगा कौन से मेंबर चला गया, कौन सा मेंबर है, उसकी जगह कौन सा नया मेंबर आया, कुछ लोग छोड़ के चले गए होंगे, कुछ लोगों की डेथ हो गई होगी. तो इलेक्शन रिपोर्ट में इलेक्ट करके कौन सा नया पर्सन आया उसकी जगह पे, तो ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन की जाएंगी. तो ये सारी रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होती है. थर्ड स्टेप होते हैं कि कौन से नए रूल्स, रेगुलेशंस और डिसीजन आपने लिए अपनी सोसाइटी में और चैरिटी में, वो आप गवर्नमेंट को बताएंगे, सो दैट वो एक आय रख सके, एक चेकिंग रख सके कि कुछ गलत तो नहीं है. एंड द लास्ट वन इज द इनकम टैक्स एंड रिटर्न. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट द बैंक अकाउंट शुड बी मेंटेन्ड बाय सीए, फॉलोड बाय ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए एंड प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, मनी का प्रॉपर हिसाब होना चाहिए कि कैसे क्या है, तो उसके लिए पूरा ऑडिट वगैरह होना चाहिए. So that's all about the big query from your side, that how to start a charitable clinic or a hospital. If you still have any query, you can drop me the mail which is shown on your screen, and don't forget to follow me on my Instagram ID which is shown on your screen. Till then, stay tuned, stay safe. Thank you for watching.